Now, without wasting further time of the students, I would like to proceed with the topic for the day, that is understanding the insolvency and bankruptcy code. Now, moving on to the next slide, let me introduce to you what is actually this insolvency code. जितना इसका हल्ला बनाया गया है, it is not that difficult. It is in fact बहुत easy कर दिया गया है. Whatever the laws were there, and now you have only one single law which you need to study. So the law is to consolidate and amend the laws relating to reorganization, insolvency resolution for corporate persons, partnership firms, and individuals. Now, after GST, this is one of the biggest economic reforms, also because it has brought lot of ease of doing business in India. So, and it is called as umbrella legislation because it has amended and repealed many laws, and now everything with regard to insolvency and bankruptcy is covered under the 2016 code. So, if you have a small problem related to insolvency or a big problem related to insolvency, you know which legislation you need to cater to. That is the 2016 code. It is referred to as IBC. Now, what was the need for this? Actually, first we had SICA, then we had Companies Act, we had SURFACI Act. इतने सारे लेजिस्लेशन में जाते जाते ना लोग कंफ्यूज हो जाते थे. दूसरी चीज ये थी कि टाइम कंजम्पशन जो था वो बहुत ज्यादा था. अगर आपको कोई कंपनी को बंद करना है, किसी इंडस्ट्री को बंद करना है, तो वो इतना हेडेक होता था कि लोग छोड़ते थे, छोड़ दो, पेपर पे रहने दो उसको, एंड हम उसको बंद नहीं करेंगे. क्यों? बंद करने से हमारे को बहुत सारे लीगल हैसल्स होंगे. तो जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म था वो बहुत इनएडिक्वेट था and it was ineffective. So with they started with revamping the law, and that is how insolvency was brought into the picture. Minimum time was 5 years for any insolvency resolution to take place, and the non-profitable assets which were there, they were lying in the bank earning nothing, literally nothing for the companies. At least with insolvency resolution process, these assets could be sold and the money from that can be utilized to pay off the debtors and also for the further business of the company. And earlier, ease of doing business was comparatively like 10%, 20%. After this insolvency resolution, ease of doing business has increased a lot in India. People are ready and willing to invest in India so that they know they have an easy exit route. अगर नहीं जमता इंडिया में बिजनेस करना, नहीं प्रॉफिट हो रहा है या वेंचर खत्म हो गया है, आप इजीली बाहर जा सकते हो. So that is the importance of introducing the insolvency code in India. Can we go on to the next slide? Yeah. So understanding the term, what are the terms specifically used in this particular code? Now we know we have Act, we have Companies Act, we have SURFACI Act. Why code was used for this? Why not Insolvency and Bankruptcy Act 2016? Why code? Now, code is usually known as the collection or compendium of law. It refers to systematic compilation of laws, rules, everything. And as I said, it is an umbrella legislation. So it includes within its ambit every law, every rule which is related to insolvency and bankruptcy in India. It is not only for the companies or limited liability partnership, but it has insolvency legislations and regulations for companies, then limited liability partnership, normal partnerships, and even individuals. So anything, any law which is related to insolvency, they have to study 2016. That is why it is a code and not an act. Now the terms which are used. Now generally people think that we can use insolvency and bankruptcy interchangeably. कभी हम bankruptcy use कर सकते, कभी insolvency use कर सकते. दोनों जो है वो सेम चीज होता है. कई लोग लिक्विडेशन से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट द सेम थिंग. Insolvency is when the person is unable or a corporation is unable to pay their bills and they become due. And bankruptcy is when a person is declared incapable. Insolvency वो stage है
where person at that particular point of time is unable to pay their dues. But it is not that he is always unable to pay their dues. Maybe he does not have, or the corporation does not have liquid cash at that particular time to pay the dues. There are certain problems which can be resolved. Bankruptcy is like the end of insolvency. Means after insolvency, you are a step ahead. You are not able to pay the debts now. There is no option but to hand over the company to the liquidator or insolvency or the liquidator to dissolve it. There is no coming back from the brink of bankruptcy. But insolvency is like the first stage where you can go and resolve back. The problems can be sorted and the company can be revived back. Okay. Now, going to the next topic is liquidation. It is the process. Liquidation is the process where the company is brought into end. It is dissolved finally. As you know, company is a legal person. It is created by law. So when you want to end also, then you have to do it through legal process. So liquidation is that process of winding up the corporation or any incorporated entity. आप लीगल तरीके से किसी को लाए हो तो आपको उसको लीगल तरीके से एंड करना पड़ेगा. लिक्विडेशन दैट प्रोसेस. सो वी कैन से इंसॉल्वेंसी इज लाइक द फर्स्ट स्टेप, देन यू हैव द बैंकरप्सी, देन लिक्विडेशन. अब यहाँ पर कोड में दे हैव यूज्ड इट इन सर्टेन वे दैट इंसॉल्वेंसी इज रेफर्ड टू मेनली फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज. बैंकरप्सी के लिए कई जगह पर होता है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए बैंकरप्सी यूज करते हैं. और लिक्विडेशन प्रोसेस, इंडिविजुअल्स में तो लिक्विडेशन होता नहीं है. इंसॉल्वेंसी जो है कॉर्पोरेट की होती है, उसके बाद वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अगर ना हो पाए तो लिक्विडेशन में चले जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ हाउ दिस इंसॉल्वेंसी लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस. इट इज नॉट दैट 2016 के पहले हमारे पास लॉ नहीं था. वी हैड लॉज बट दे वर नॉट दैट डेवलप्ड लॉ. Two laws which were very old law was Presidency Towns Insolvency Act and Provincial Insolvency Act. ब्रिटिशर्स के जमाने का लॉ था, बहुत टाइम तक चला, उसके बाद में उसको रिपील करने की जरूरत थी. लॉ वाज देयर एग्जिस्टिंग इन द बुक्स विथ नो यूज. सीका केम, सीका वाज देयर बट सीका अपने नाम के हिसाब से, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, इट बिकेम अ सिक एक्ट इन इटसेल्फ. कंपनीज जो है वो सिका के अंडर जाती है, रिहैबिलिटेशन हो नहीं पाता था, उसके बाद भी वो पड़ी रहती थी सिका में. Then came RDBFI Act and SARFAISI. They were successful to some extent. उन्होंने relief दिया. But non-profitable assets इतने ज्यादा होते जा रहे थे कि revamp की बहुत जरूरत थी. Law needs to develop. It has to be dynamic with time. Companies Act 2013 आया, उसने बहुत तरीके से corporate structure की revamping करी, but it was not successful with regard to insolvency and bankruptcy because it is such a large domain that Companies Act कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर के साथ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से भी डील करे वो पॉसिबल नहीं था. इसलिए 2016 में आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ इन दिस लेक्चर माय मेन फोकस विल बी इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट एंड उसके इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस करेंगे. फॉर दिस लेक्चर आई एम नॉट डीलिंग विद पर्सनल इंसॉल्वेंसी, सो वी विल हैव आवर फोकस ऑन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now, evolution of the code. Law कैसे बना, that is important to understand. So, how did the code come into play? Insolvency bill was introduced in the Lok Sabha. It was referred to the parliament and the joint committee report was given. The committee report which was there on insolvency was in two parts. One was the rationale and design, and second part was the comprehensive draft of the insolvency and bankruptcy bill. Now, this second part is actually which has come up as the code. That is the 2016 code which was given to us. The first part of the report said that how insolvency could be done, what will be the design of the act and everything. But the second part was the actual act in itself. And then on 1st December 2016, the Insolvency and Bankruptcy Code was given to the public and it was notified by the
government. Next slide. The legislative approach. Now, when you have new legislation, what is so new in this legislation? क्या नया दिया इस लॉ ने हमारे को? पहला, sole regulator of insolvency. As I said, it is an umbrella legislation. Anything which is related to insolvency and bankruptcy, you know which act to look into. So it is the sole regulator of insolvency. Then it widened the definition of creditors to include all types of creditors. Now, people who have given money to the company, who have given loan to the company, and banks already had different laws which could have helped them. But this act also, sorry, this code also introduced operational creditors as the creditors. Means those people who are working for the institution, those who are working for the company. If company fails to pay their debts also, their dues also, they were also taken within the purview of definition of the creditors. Then new infrastructure was created. An entire new system for insolvency was created. Introduced systems included the Insolvency and Bankruptcy Board of India, a system for resolution professional, information utilities, and NCLT was given power to deal with all the cases. In my next slide, I'll be dealing with this new infrastructure. Now, separate provisions for corporate and individual insolvency. Now, since formation of a corporate is very different from any other form of business organization and different from insolvency of individuals, so the law has kept it separate. Second part deals with corporate insolvency, whereas the third part deals with the personal insolvency. So the law understands that there is separate requirement for corporate insolvency, and it has kept it that way. Fast track procedure for resolution. Now, where the minimum time taken for resolution was 5 years, they have introduced a timeline, a time frame where this resolution could be done in a period of 180 days. Imagine just 180 days. From 5 years, it has been cut short to 180 days. But I'll bring your attention to one point. Okay, it is there 180 days, but generally it takes like 330 days. The additional timeline, and when we see the delays, everything, the time frame goes to 330 days. Thereafter, the company needs to go into liquidation. Then we have moratorium. Moratorium means halting everything else. Once a company goes for insolvency resolution process, any case, any litigation under any other act will be stopped. It has to stop, and only the insolvency resolution will be looked forward. We'll deal this also in our other slide. Now, waterfall mechanism for payment. When payment has to be made and to whom payment has to be made, that is very necessary to understand. Now, law under the Insolvency Code IBC, it has provided a proper list. First, who will be paid, second, who will be paid, third, who will be paid. This is known as the waterfall mechanism of payment. Just like waterfalls from top to bottom, similarly, the list goes from top to bottom. The one who is there on the top will be paid first, then second, then third. That is the waterfall mechanism. Coming to the next slide. The structure of the code. As I said, it has been divided into different parts. Part 1 tells you the definition. Second part is insolvency resolution and liquidation for the corporate person. This is what we will focus today on, how corporates are liquidated. Third part deals with insolvency resolution and liquidation for partnership firms and individuals. Part 4 is the regulation of insolvency professional agencies and information utilities. As I told you, there are 4 things, new infrastructure which has been brought into play. One is the IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board. Then second is the Insolvency Resolution Professionals, Information Utility, and NCLT. These 4 pillars have been introduced for insolvency resolution. IBBI is the functional body. It looks after the working of the code completely. Insolvency resolution professionals are a new category of professionals which has been given by the code.
they will help in the process of resolution of insolvency. Means that now there is a specialized person who knows how to resolve the problem of insolvency. Like for example with doctors, आप एक बार जनरल डॉक्टर के पास जाते हो, उसके बाद में you go to the specialist. If you have a heart problem, you will go to a cardiologist, not to a medicine person. सिमिलरली अगर आपको इंसॉल्वेंसी करवानी है, बैंकरप्सी, आपका प्रॉब्लम इंसॉल्वेंसी का है, तो यू हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट ऑफ दैट डोमेन. सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज दैट स्पेशलिस्ट to whom the corporate can go and say that please save me from insolvency. If you can save me, then that is the best possible solution. Give me that. If not, we will look for other options. So that insolvency professional or resolution professional is that particular person. Then you have information utility. Again, a network which is created to provide information about the corporates. They do the pre-work of collecting information for you so that if there is something required for any business organization, their information is readily available. So that is insolvency information utility. Then there are other miscellaneous provisions and the schedule. It provides the various amendments which are carried out. We will cover three most important amendments in today's slide. Next slide. Now, applicability of the code, where it has been applicable. It is applicable to all corporate entities, limited liability partnership, partnership firms and individuals. The remedies which are provided under the code includes insolvency resolution process, bankruptcy, liquidation, and if a company wants to go through voluntary liquidation, then instead of Companies Act 2013, now they have to go through IBC 2016. Next, please. Now, the infrastructure which has been created, as I told you, there are four main pillars which have been created under the Insolvency and Bankruptcy Code. Three are the regulatory authorities and one is the adjudicating authority. The regulatory bodies are the Insolvency Professional Agency. Their basic work is to register the insolvency professionals, and when the corporate entity goes into liquidation, they will appoint an insolvency professional for that particular company who will look after the work of insolvency. Now, if a company has filed an application for insolvency, the agency will appoint a person who will act as the insolvency resolution professional. He will take over the management of that company. The management of company will work in coordination with the insolvency resolution professional, and then they will work together to save the company, bring it back from the insolvency, and either it can be brought back into the trap or decided to liquidate that particular company. So that is the work of IPA, Insolvency Professional Agency. Then you have insolvency professionals. Now, during the process of insolvency, two kinds of insolvency professionals are appointed. One is interim. As soon as the application is filed, till the time the actual insolvency professional is not appointed, you have the interim insolvency professional. He will look after and take over the business immediately. After that, after deliberation of the company, if they think that the interim professional is not good, they can apply for a change in the insolvency professional. If they want, they can continue with the interim professional and he will become the resolution insolvency professional who will look after the process of insolvency resolution. Now, this process of insolvency resolution is known as CIRP, that is Corporate Insolvency Resolution Process. I already told you about information utilities. Now, these are the regulatory bodies. Adjudicating body is the NCLT and the appellate body for adjudication is the National Company Law Appellate Tribunal. Now, insolvency professional agencies, insolvency professionals, and information utilities, they all come within the regulator,
the Insolvency and Bankruptcy Board of India. That board looks after all the three IPAs, IPs, and information utilities. Any case which has to be filed with regard to insolvency, or if the resolution plan is not, if the company is not happy with the resolution plan drawn by the professional, they can go and file an application in the NCLT. So every application with regard to insolvency needs to be filed at the NCLT. Next slide, please. So now we will see how this process starts, the corporate insolvency. Now I've given you the backdrop of everything with regard to insolvency. Now the actual process, what is the process which law has given? Now, the first step is that an application needs to be filed for corporate insolvency resolution process. Who can initiate that application? कौन फाइल कर सकता है? कौन कंपनी को इंसॉल्वेंसी के ब्रिंक पे ला सकता है? First category is the financial creditor, which is given under section 7. Any person to whom a financial debt is owned by the company, and it includes a person to whom such debt is legally assigned or transferred. Now, whoever the company takes money from, a financial debt which is owed by the company, that person can file for insolvency of the company. Now, ऐसा नहीं है कि कोई भी जब चाहे तब कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर दे. When he has a legal right to get money from the company, then only he can file it, and the amount which has been prescribed by the law is rupees 1 crore. So if the amount is less than 1 crore, then you cannot file an application for insolvency against the corporate. The amount needs to be below rupees 1 crore. Then an individual person, if his amount is rupees 1 crore, he can file. Or otherwise, if there are more than one financial creditors, they can join hands and together file. Now, law provides that at least 100 financial creditors should be there. If not 100, then 10% of the total number of financial creditors should be available to file the application for insolvency. So, Section 7 provides that financial creditors can file application for insolvency if there is a legal financial debt which is owed by the company. And one more important thing here is that they should demand that is first, the financial creditor have to demand the money from the company. As soon as it becomes due, they have to ask for their money from the company. It's not like कि financial creditor directly जा करके application file कर देगा. उसको पहले company से demand करना पड़ेगा कि yes, you have this legal debt towards me, pay this debt. If the company fails to pay that debt within 1 month of giving the notice, then the financial creditor can file for the insolvency application, not before that. So that notice period is essential. Next, you have section 8, that is the operational creditor. A person to whom an operational debt is owed and includes any person to whom such debt has legally been assigned or transferred. Now, there are many people who deal and do day-to-day work with the company. Now, this is the new category of creditors which was created by law. That is the operational creditors. They owe operational debt to the company, like the workmen of the company, the other people who work for the company, they come within the category of operational creditor. Earlier, they had to go under the labor law, but that process is very tedious. Abhi, they have been brought within the category of creditors, the people who can bring the company down. So they have basically उनके हाथ में एक पावर दिया जा रहा है कि अगर आपका पैसा नहीं दिया जाएगा तो आपको सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है. आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और इंसॉल्वेंसी के लिए कंपनी को बोल सकते हो कि अगर आपने मेरा पैसा नहीं दिया within this much time, then I will take action against you. So
आप सिर्फ बाकी बाहर वालों का पैसा नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी पैसा देना है. Next, the corporate data. When we say corporate data, the section mentioned here is section 9. Sorry, it has been a mistake. It is section 10. The corporate person who owes a debt to any person. Now, corporate debtor here is the company itself. कंपनी को जब लगता है कि मैं अब आगे का पैसा लोगों का नहीं दे सकता, आई कैन नॉट पे द मनी, the company needs to say that in the open so that multiple legislation or multiple litigations are not filed against the company. So that way the company can itself file for insolvency under the IBC. Next slide, please. Now, the process of insolvency resolution. Now, if you see the slides properly, on top, we have the steps and the numbers which are written there like 0, 14, 16, 21. These are the number of days, the time limit which has been provided for each step. If you see here, 180 days is the time limit. That means law is giving a highly ambitious time frame of 180 days to complete the entire insolvency resolution process. But now, I'll tell you honestly, while doing my research, I had talked to a lot of insolvency resolution professionals also, had been through a lot of data also. 180 days का टाइम फ्रेम जो है वो एक्चुअली में फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनिशियल फेज जो है उसमें टाइम लगता है. यस, वी हैव इम्प्रूव, यस, लॉ हैज प्रोवाइडेड अ ग्रेट सोल्यूशन, बट 180 डेज एग्जैक्टली फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ वील सी द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. Now, first is the filing of application to the NCLT. Before that, I already told you there is one stage, that is you have to give notice to the other party to pay the money. That is why it is written number of days -14. One notice has to be given. Filing of application to the NCLT. NCLT will either accept the application or reject the application. Now, if the application is rejected, then the process will not come into force. So that point is out of question for us. We will see where the application has been admitted by the NCLT. Now, if the application is incomplete, or if they have not given enough document or proof, if notice has not been served, then the application might be rejected. Otherwise, the application is accepted by the NCLT. So after filing of the application, there is admission of the application by the NCLT. As soon as the NCLT accepts the application, there is declaration of moratorium and public announcement. Public announcement means we are letting the public know that this company has been brought within the purview of insolvency. इस कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन फाइल हुआ है. That is what is the purpose of public announcement, so that people are brought in, people are made aware by this company is having some glitches with regard to finances. So when you are dealing with this company, be aware, भाई हो सकता है ये आपका पैसा ना दे पाए. That is the purpose of public announcement. And declaration of moratorium means आप कंपनी से जिसको भी पैसा चाहिए उसको एनसीएलटी को अप्रोच करना पड़ेगा और इसी एप्लीकेशन में कंबाइन करना पड़ेगा. आप कोई और लिटिगेशन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट फाइल एनी अदर litigation against the company. Why? Because it will just lead to multiple litigation. Resolution यहाँ पर हो रहा है, आप भी इसमें अपना नाम ऐड करा लो, आपको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा. Then the next step is that within 14 days, the NCLT will appoint an interim resolution professional. As I told you, there is the insolvency professional is of two types. One is interim, that is interim resolution professional, and the other is resolution professional. जब तक कंपनी को एक परमानेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं मिल जाता, तब तक एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, who will help the company to do the business, to maintain the business. He will look after the files of the company. Then the IRP
will hand over the work to the resolution professional. Now, say, suppose, for example, if an IRP has been appointed by the NCLT and the company or the management of the company, they are not happy with that IRP, they can ask for change of resolution professional. Then the court will again appoint another resolution professional. बट इट इज नॉट लाइक कि आपको एक नहीं पसंद आ रहा है आप दूसरे को बुला लो, दूसरा नहीं पसंद आ रहा है तीसरे को बुला लो. चॉइसेस बहुत ज्यादा नहीं है. यू हैव टू गिव अ वैलिड ग्राउंड व्हाई दिस आईआर, व्हाई नो टू दिस आईआरपी. Then only the court will accept the application. Then after the appointment of the resolution professional, two registered valuers are appointed. They will now here it is written appointed two registered values to calculate the liquidation. Now we are not yet going into liquidation, but they are appointed to know the valuation of the company. Actually, at times what also happens that company is into a healthy condition, but balance sheet में आपके पास लिक्विड कैश की कमी हो जाती है, तो आप लोगों का डेप्ट नहीं दे पाते हो. The only requirement is कि आपके जो डेड एसेट्स है, नॉट रिक्वायर्ड एसेट्स है, उनको सेल आउट कर दिया जाए और जो आपका वर्किंग एसेट है उनको यूज में लाया जाए. आप ये प्रोसेस भी कई बार होता है कि मैनेजमेंट जो कंपनी का है वो ओवरलुक कर देता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम when these registered valuers actually calculate the value of the company, तो उनको पता चल जाता है कि कंपनी में कितना बैलेंस बाकी है, whether the amount or the value of the company, is it enough to give it to the creditors of the company. क्या कंपनी के हर क्रेडिटर को उसका डेट मिल पाएगा? अगर पूरा नहीं मिल पाएगा तो कितना मिलेगा, उसी के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. और अगर आईआरपी को लगता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि कंपनी को बंद करने की जरूरत नहीं है, रिजॉल्व, इसके लिए एक और तरीका है, दे कैन कम अप विथ द रेजोल्यूशन प्लान. मतलब कंपनी को बचाने का तरीका, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान. A plan which is formed by the resolution professional to save the company from the brink of bankruptcy. So he will come up with the process of how to save the कंपनी. नाउ अब ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे होती है, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ में एक मीटिंग करी जाती है और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म की जाती है. मींस नाउ देयर कैन बी वन क्रेडिटर हु इज फाइलिंग हु हैज डेब्ट ऑफ 1 crore rupees, or there can be hundreds of creditors who have come together and filed an application. आप सिर्फ उन क्रेडिटर्स को नहीं लोगे, आप कंपनी के जो बाकी क्रेडिटर्स है, बिकॉज इट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द एंटायर कंपनी, not only for the few people. So all the creditors need to be called and a committee of creditors will be formed. They will put in their claims. वो अपने claims जो है resolution professional के सामने रखेंगे ताकि resolution professional को पता चल सके कि actual में कंपनी की liability कितनी है. What is the liability of the company to pay to the creditors. So creditors will submit their claims. Then after that, in the first meeting of the COC, he will bring in all the information which is collected. That information is given a form which is known as preparation of information memorandum. An information memorandum will be prepared जिसमें सारा क्लेम्स का इंफॉर्मेशन है, हर क्रेडिटर को कितना देना है, वेदर इट इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर और द ऑपरेशनल क्रेडिटर. Then according to the claims, the resolution professional will derive a submission plan. That is, the resolution plan will be made by the resolution professional. That will be brought in front of the committee of creditors. If they think, yes, this resolution can be approved, या ये resolution plan जो है ये अच्छा है, हमारे को इस तरीके से हमारा पैसा मिलेगा, so they will approve the resolution plan. If they do not like the resolution plan, they can reject the resolution plan. Then the only option will be to go for the liquidation of the company if the resolution plan is rejected. But if the resolution plan is approved by the creditor, then as per the resolution plan,
the approval, after the approval of the resolution plan, the plan will be forwarded or given to the NCLT. They will approve the plan. After NCLT has approved the plan, we will go for resolution of insolvency. अगर NCLT भी plan को reject कर देती है, then the only option which is left is to liquidate the entity. अगर resolution plan reject हो जाता है COC से या NCLT से, then it is not that the insolvency resolution professional will derive another plan. No, the only option then will be to liquidate the corporate entity. So this is the corporate insolvency resolution process from step 1 to end. अगर plan accept हो गया, very nice, resolve. Company के problems को solve करो. As soon as it is solved, the resolution professional will hand over the company back to the management after solving the problem. Whatever the assets are left, company will function with the remaining assets. और अगर नहीं होता है तो he will proceed with the liquidation of the entity. Then that person who is resolving, he will be appointed as the liquidator for the company. He will start the process of liquidation. Please move ahead to the next slide. We'll skip this slide. It is the judgment. What are the rights of corporate debtor to file? Now we have seen that the committee of creditors, that is the creditors, whether under section 7 or 9, they are filing for the insolvency resolution. I said that under section 10, even the corporate debtor, that is the company itself, can file for insolvency resolution process. अगर company खुद default करती है, if it makes a default of payment, then appropriate authority, AA is the appropriate authority, they can file an application and that we do not have money, please declare us insolvent and appoint a insolvency resolution process professional for us. So within 14 days, an application will be accepted and corporate insolvency resolution process start हो जाएगा. Now the process is similar. जो पुराना था, इसमें बस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जगह कॉर्पोरेट डेटार का जो मैनेजमेंट है वो फंक्शन करेगा. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल कम इनटू प्ले. They will have to accept the resolution plan in this also. So the process which is there, if after the section 10 application is also similar. The only difference is वहां पर application file करने वाले जो थे वो कंपनी के क्रेडिटर्स थे, यहाँ पर कंपनी खुद है. Then if the appropriate authority thinks that the application is not proper, it can reject the application. It can also give time to the company. अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को दूर करके रेक्टिफाई करके 7 days के अंदर आप फिर से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now, section 11 provides for certain category of persons who shall not be entitled to make an application. मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह करके भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए नहीं जा सकते. एक, अगर corporate debtor is already under a resolution process, it cannot file for a new resolution process. ठीक है. अगर 12 months पहले आपका resolution already हुआ है, say for example, a company has completed its resolution in December 2024. So for 25, it cannot make a fresh resolution application. Or a corporate debtor or a financial creditor who has violated the terms of resolution plan. जैसा कि मैंने बताया कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, उसको सब लोग फॉलो करते हैं. तो अगर रेजोल्यूशन प्लान के टर्म्स और कंडीशंस को कोई भी कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉलो नहीं करता है, now you are not following the law, you will not get relief from the law. So that person will not be allowed to file the application for 12 months. Next, lastly, a corporate debtor who against whom liquidation order has already been made. मतलब अगर कोई कंपनी ऑलरेडी वाइंडिंग अप में है या ऑलरेडी लिक्विडेशन प्रोसेस में है, तब आप उसको इंसॉल्वेंसी में नहीं ले जा सकते, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो दैट कैन नॉट बी डन नाउ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. We move ahead with this please. Now, as I told you, the process of liquid insolvency resolution is there. अगर वो हो जाता है तो कोर्ट जो है रेजोल्यूशन प्लान एक्टिवेट कर देगी. नहीं
तो लिक्विडेशन करेगी कॉर्पोरेट डेटर का. नाउ हाउ डज दिस लिक्विडेशन प्रोसेस? आफ्टर CIRP हैज बीन कंप्लीटेड, रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया, then liquidation process comes into picture. The liquidator is appointed. Those two valuers who were appointed during the corporate insolvency process, उन्होंने पूरी कंपनी का वैल्यू कैलकुलेट किया था. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विडेशन एसेट. मींस कंपनी के कौन से एसेट्स जो है वो बिक सकते, दैट कैन बी सोल्ड. सारे क्लेम्स को कंबाइन करके उनको वेरीफाई करके लिक्विडेशन एस्टेट से मैच करेंगे. या तो क्लेम्स एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे. वंस दे आर एक्सेप्टेड, द लिक्विडेशन एस्टेट इज डिसाइडेड. टाइम इज गिवन. अगर किसी क्रेडिटर का क्लेम रिजेक्ट हो गया, टाइम इज गिवन कि वो एनसीएलटी में अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि भाई मेरा क्यों नहीं दिया जा रहा है क्लेम. देन एनसीएलटी विल रिजॉल्व दैट. once that resolution is done, we will again move ahead with the liquidation process. The liquidator will scrutinize preferential, undervalued and extortionate credit transaction. मतलब कौन कौन से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है जिसको पे करना चाहिए. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स विल बी डन. एक बार सारे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सारे क्रेडिटर्स के जो क्लेम है वो पे ऑफ हो गए, कॉर्पोरेट डेटा डिसॉल्व हो जाएगा, उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से डिलीट कर दिया जाएगा, स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा. देन दैट विल बी द एंड ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वाटरफॉल मैकेनिज्म मतलब किस तरीके से जो है वो पेमेंट किया जाएगा. ना ईदर इट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन हो रहा है, पेमेंट किया जाएगा. इन केस ऑफ लिक्विडेशन, assets are sold and the proceeds are distributed. अगर insolvency resolution हो रहा है तो जो कंपनी के पास, इसका मतलब इतने assets हैं कि उससे कंपनी का डेट पे ऑफ कर दिया जाए. So first step is secured creditors. सबसे पहले जो है वो secured creditors को दिया जाएगा अगर वो अपनी सिक्योरिटी जो दिए थे उसको relinquish करने को तैयार है तो. And workmen's due, that is the operational creditor, they have been given priority here. अगर उनका क्लेम 24 months से preceding जो भी है वो पे किया जाएगा. Then employee wages, then comes the unsecured creditor, then the government dues, whether central government or state government. अगर इसके बाद और कोई ड्यूज बचे हैं तो वो पे किए जाएंगे. Once all the creditors are satisfied, then comes the stakeholders of the company, the shareholders of the company. Preference will be given to the preference shareholders. After that, equity shareholders or partners will be given the money. So whatever is left off will be paid to the partners or the shareholders of the company. So this is how law has kept everything in order. कि भाई आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो रहा है, पेमेंट किसको किसको किस ऑर्डर में आपको करनी है. एक और चीज जो लॉ ने देखा है कि फर्स्ट कैटेगरी का जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तब आप सेकंड कैटेगरी में जाओगे, फिर सेकंड कैटेगरी का हो जाएगा तब आप थर्ड कैटेगरी को करोगे, उसके बाद आप फोर्थ कैटेगरी को करोगे. सो द लिस्ट इज वेरी क्लियर एंड इट इज गिवन अंडर द IBC. नेक्स्ट प्लीज. Now, as I told you, I will be talking about the major amendments to the code. Earlier, first which was there was personal guarantors have been brought within the code. Now, when you have studied contract, आपको एक चीज होगा कि there is a contract of guarantee. अगर जो डेटर है जिसने लोन लिया है, अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो गारंटर देगा. इस अमेंडमेंट के पहले तक ये था कि आप डेटर के अगेंस्ट तो एक्शन ले सकते हो, पर जिसने उसकी गारंटी दी है उसके अगेंस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा. क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि पर्सनल डेटर जो है या जिसने गारंटी दी है उसको आप इंसॉल्वेंसी के रेजोल्यूशन में ला सकते हो या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हो. Now, after this amendment, the personal guarantors also fall within the ambit of Part 2 of the code. Now, moratorium is applicable only on the assets of the corporate debtor. पर आपका जो पर्सनल डेटार है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता था. सो वो क्या करता था,
दी पर्सनल डेटार डेप रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाकर के कॉर्पोरेट डेटार के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता था। अब पर्सनल डेटार जो है, जब तक कॉर्पोरेट डेटार के अगेंस्ट सारे डेप्स नहीं पूरे किए गए हैं, तब तक कॉर्पोरेट डेटार भी जो है, he will be under the process of resolution, means जो एक्शन लिया जाएगा वो उसके अगेंस्ट भी लिया जाएगा, and he will also be implicated under the IBC and not under the contract। मतलब आपको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जाकर के गारंटी इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप IBC में ही उसको रिजॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, the changes which was introduced under section 2E of the code, which provides that it will apply to personal guarantors of the corporate debtor, and it defined a person as corporate guarantor if that person is the surety in a contract of guarantee to the corporate debtor. Moratorium will not be applicable to a surety under a contract of guarantee of the corporate debtor. Next slide, please. Now, there was introduction of section 29A. Section 29A, why this section was introduced? There was no specific criteria or qualification for a person to be resolution applicant. Now, who is this resolution applicant? Means a creditor who wants to go and file for insolvency resolution. मतलब वो व्यक्ति जिसके पास कंपनी, सॉरी, वो व्यक्ति जिसको कंपनी पैसे ओव करती है, बट इसका कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि भाई कितने पैसे ओव करती है। क्या उसके अलावा अगर प्रमोटर है वो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाए, मतलब उसी ने कंपनी को खड़ा करा है और वो खुद जाकर के पहले अपने डेब्ट्स क्लियर कराए। सो देयर वाज नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया एज टू हु विल बी द पर्सन हु विल फाइल फॉर एप्लीकेशन। So section 29A was introduced, ये discrepancy हटाने के लिए, इसके लिए लाया गया था। This wide scope permitted by the court was misused by the promoters। ये लोग backdoor entry करके मैनेजमेंट में वापस जाते थे। Now इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का एक प्रोसेस है कि अगर आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन रहे हो तो आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। तो अगर प्रमोटर्स को परमिट कर दिया जाएगा तो उनको फिर से जो है मैनेजमेंट में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। They will be the part of the process and they can dilute the entire process. So to stop this backdoor entry, section 29A was introduced and qualification was introduced as to who will be allowed to be the resolution applicant. Next slide, please. We'll skip this slide. After 29A was introduced, it gave layers of person who will not be allowed to be the resolution applicant. मतलब कौन है जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में नहीं पार्ट ले सकते। It had 4 layers within it. The person is ineligible if he is a willful defaulter or a disqualified director, means a person who has been disqualified by the company, अब वो इस प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकता। Then a person who is connected to this ineligible person, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वो विलफुल डिफॉल्टर से या डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो। When we talk about person connected, that person can be the spouse of the person, that person can be the debt or financial debtor। अगर वो किसी और कंपनी में पार्टनर है, किसी भी तरीके से उस पर्सन से रिलेटेड है, तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। Say for example, if I am disqualified, then my husband, my son also will be automatically disqualified। assumption ये रहेगा कि वो लोग मेरे behalf में या मेरे हिसाब से काम करेंगे। So any person who is related to me, now if any person is related to me financially, or say for example, if I have a partnership firm, so my partner will obviously be interested in my finances. So not only me, but my partner will also be disqualified from being a resolution applicant. Then a person who is not only related or connected person, but also a person who is acting jointly in concert with the above 3 layers.
अब इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे डायरेक्शन में चल रहा है या मेरे से रिलेटेड या कनेक्टेड पर्सन के डायरेक्शन में चल रहा है, उसको भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। सो सेक्शन 29A ने जो है वो बड़े वाइड एम्बिट जो था, जिसमें कोई भी जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में पार्ट ले सकता था, उसको बहुत नैरो कर दिया। एंड नाउ ओनली द पीपल who are genuinely interested and who have genuine claims against the corporate debtor, those can be the part of the committee of creditors and insolvency resolution process. Okay, next slide, please. Now, another introduction which was done was a totally new category of financial creditors. Those were the home buyers. Now, who are home buyers? Why they were एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है उसमें फ्लैट्स वगैरह खरीदते हैं. दे आर नेवर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड व्हेन they do not get the flat or the money back, they do not have any other way to get their money. पहली बार ऐसा हुआ था कि इंसॉल्वेंसी एक्ट में उनको पावर दिया गया था कि भाई अगर आपको आपके डेजिग्नेटेड टाइमलाइन पे जो फ्लैट्स है, घर है, वो नहीं मिल रहा है, तो यू विल बी ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ दैट पर्सन. मतलब जिसने आपसे पैसे लिए हैं आपको प्रॉमिस करके कि आपको घर मिलेगा, आपको फ्लैट दिया जाएगा, उसके बदले में आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो. तो गवर्नमेंट सॉरी द कोर्ट, दे ट्रीटेड देम एज द इन्वेस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. वो लोग नहीं कि कंपनी के कस्टमर्स है, नहीं, उनको इन्वेस्टर की तरह ट्रीट किया गया. Why? Because they gave the money which was utilized by the builder to do the construction work. So they were treated as investors, the people who have given loan to the company. They owe a debt towards the company owed the debts towards them. So these home buyers were brought within the purview of financial creditors. उनको financial creditor के purview में लाया और same power दिया गया जो सेक्शन 7 में उनके पास में था, बाकी के क्रेडिटर्स के पास में था. सो दैट वाज अ वेरी one step ahead. The law was interpreted in such a way that the power was given to the financial creditors who are categorized as home buyers. बट इस अमेंडमेंट का एक ड्रॉबैक ये है कि आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर होम बायर को भी उस कैटेगरी में लाया. अब हर कोई जो अलग अलग तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारे के सारे जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बनने की कोशिश कर रहे. सो देयर वाज लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन दी कोर्ट कि भाई आप, हम भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, हम भी फाइनेंशियल, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कंपनी and a person who is merely the customer of the company or the consumer of the company. Although now that matter has been on hold, but as of now, home buyers are the financial creditor of the company, and that was done by the amendment. Okay? Next slide, please. Please skip this slide because we don't have the time to go for the case laws. Now, the next important amendment which was done was with regard to the threshold limit. Earlier, when you see the amount, you will see that it is written under the law is 1 lakh rupees. बहुत जगह स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट है जिसके बाद इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है. तो कोर्ट में पहले अमाउंट था 1 लाख रुपीस. उसको कोविड के टाइम पे 2020 में इंक्रीज करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, उन्होंने नोटिफिकेशन के बाद में इस अमाउंट को 1 लाख रुपीस से 1 करोड़ रुपीस कर दिया था. वाई? बिकॉज द कोर्ट वाज एक्टिंग लाइक अ स्वॉर्ड. किसी का भी पैसा, थोड़ा भी पैसा जो है वो क्लियर नहीं होता था और वो जो है वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल कर सकते. इमेजिन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट एंड ऑल, जिसने 2 लाख रुपए देने में थोड़ा भी डिले किया हो, उनके अगेंस्ट जो है इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन फाइल कर दिया. So that it was opening floodgates of litigation for the tribunal, जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे. सिमिलरली छोटे छोटे अमाउंट के लिए कंपनीज को इंसॉल्वेंसी के
प्रोसेस में जाना पड़ रहा था. तो law was modified and the amount was increased from 1 lakh rupees to 1 crore rupees. So then the insolvency code was modified. After that, now the status is clear. Amount is rupees 1 crore. Only after that the insolvency application can be filed. Next slide, please. This is the same. The notification number is given, which is 1205 dated March 24, 2020. The amount of default under section 4 was increased from rupees 1 lakh to 1 crore rupees, and the power was exercised by the central government. Next slide, please. Now, powers on the of the NCLT. What are the powers of the adjudicating authority? As already mentioned, there are two authorities. One is the National Company Law Tribunal and the other is National Company Law Appellate Tribunal. Now, they have the exclusive jurisdiction of all the cases which are related to insolvency, and they have the power to fast track those cases. They will not be bound by the civil procedure code, but only natural justice. Now, because we need to fast track the process, अगर वो लोग प्रोसीजरल एस्पेक्ट में जाएंगे तो डिलेज होगा. सीपीसी अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल हैव टू गिव टाइम टू द अदर पार्टी कि वो अपना एप्लीकेशन दे, उसका रिप्लाई देने के लिए 3 महीने का टाइम दे. तो फास्ट ट्रैक करने के लिए सीपीसी को एनसीएलटी से दूर रखा गया. आईबीसी के केसेस में सीपीसी अप्लाई नहीं होगा. Then the orders of NCLT and NCLAT have same effect as the decree of the civil code. अगर आप आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल देखो तो उनको जाकर के अपना अवार्ड एनफोर्स कराना पड़ता है, बट एनसीएलटी की ऑर्डर्स पे ऐसा कोई नहीं होता. इट इज इक्विवेलेंट टू अ डिक्री ऑफ द सिविल कोड. देन इट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. 2 साल के टाइम पे. सो दे हैव द पावर टू रिव्यू द डिसीजंस आल्सो. Then, from the time of initiation of insolvency resolution process till discharge of corporate debtor, either by settlement or liquidation, every step requires approval of NCLT. जब से आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू हुआ है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो भी करता है, आईआरपी जो भी करता है, उसके लिए उसको एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, सो दैट ही डज नॉट एक्ट लाइक अ डिक्टेटर. ही वर्क्स प्रॉपरली एंड विद इन द लॉ. सो बेसिकली जितना भी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, एनसीएलटी उसको ओवरलुक करता है. सब चीज जो है वो ट्राइब्यूनल की नजर में होता है. That is the power of the tribunal. Next, please. Now, कुछ केसेस में कोर्ट को इंटरवेन करने का परमिशन दिया गया है. दैट इज इफ द एप्लीकेशन कंसर्निंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, फर्स्ट इट हैज टू बी फाइल्ड विद द एनसीएलटी. अगर सेक्शन 231 जो है वो सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कंप्लीटली बार करता है. नाउ जुरिस्डिक्शन फॉर इंटरिम रिलीफ also has been barred. Civil court cannot interfere in NCLT process. The only power which is given to the High Court, that to some extent they can work out or they can entertain the application with regard to it. But the intent is to keep the High Courts or the civil courts out of the process of insolvency resolution. इसीलिए एनसीएलटी को मैक्सिमम पावर्स दिए गए हैं कि इंटरिम रिलीफ भी अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आपको एनसीएलटी के पास ही जाना पड़ेगा. ओनली व्हेन इट इज टू डू कंप्लीट जस्टिस या एनसीएलटी में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो पा रहे, तब आप हाई कोर्ट में जाओगे. नेक्स्ट प्लीज skip the case law, this slide. Then I have chalked out myself few questions जो students के मन में रहता है. I will answer those questions for you. क्या वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड किया है आईबीसी ने? Yes. अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होते हुए उसने पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है. क्या इसमें हर कैटेगरी के स्टेक होल्डर्स का, मतलब कि कंपनी,
कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के क्रेडिटर्स, सबका इंटरेस्ट देखा गया है। यस, एंड टाइम टू टाइम जो कोर्ट है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का डेफिनेशन वाइड कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव ब्रॉट इन दी होम बायर्स विद इन दी परव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, की वो भी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर सकते हैं। पहली बार ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी लाया गया था। सो यस, दिस लॉ हैज ब्रॉट इन within its framework all the stakeholders who are involved in the company directly. So it is looking after interest of all the stakeholders. Next slide, please. Whether the time frame which is provided under the act, the code is valid or it is adequate or not. Now, when we see the time frame, it is 180 days which is given. But this 180 days is actually the initial period. After that, law, the code provides that आप 90 days का extension ले सकते हो. 90 days के बाद again 60 days का extension ले सकते हो. So the time frame is actually 180 plus 90 plus 60. In total आपका 330 days तक जा रहा है, which is an adequate time frame. लॉ का पर्पस था, आईबीसी लाया इसीलिए गया था, सो दैट इजी एग्जिट रूट प्रोवाइड हो। अगर आप टाइम बहुत ज्यादा डिलेस परमिट करोगे तो द एंटायर पर्पस ऑफ लॉ विल बी लॉस्ट, सो द टाइम फ्रेम नीड्स टू बी फॉलोड। इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट आपने 4 नए पिलर बना दिए, आपने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड बना दिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स निकाल दिए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज निकाल दी, बट क्या एडिक्वेट नंबर है? नहीं, दे नीड टू बी इंक्रीज, दे नीड टू बी इंक्रीज। अभी इंडिया में एज ऑफ नाउ वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम ऑन पेपर, बट इतने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। एनसीएलटी के ऊपर ऑलरेडी कंपनीज एक्ट का बहुत सारा काम है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर ज्यादा है, जो नंबर ऑफ लिटिगेशन है वो ज्यादा है। So yes, infrastructure wise, the law needs to be developed. Next, please. I have already covered the moratorium effect while explanation. Section 14 जो है वो मोरेटोरियम होता है, जिसमें ये लिखा गया है कि बाकी सारे जो प्रोसीडिंग्स है कंपनी के अगेंस्ट वो सीज कर दिए जाएंगे। सो अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग है वो भी सीज हो जाएगा जिस दिन से कंपनी रिजोल्यूशन प्लान में जाएगी या जिस दिन से उसके अगेंस्ट सीआईआरपी एक्टिवेट होगा। तो बाकी सारे लिटिगेशन चाहे किसी भी एंगल के हो वो एक बार को सीज हो जाएंगे। पहले कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद ही आपका बाकी के लिटिगेशन होंगे, बिकॉज आपके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में दे विल लुक आफ्टर एवरीवन, एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी विल बी टेकन केयर ऑफ, तो उनके सेपरेट लिटिगेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ IBI, the Insolvency and Bankruptcy Board of India, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अपन ऑलरेडी देख लिया। इट हैज विद इन इट्स परव्यू द एजेंसी, द प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। The work of IBBI is to look after the working of all the insolvency professionals, these agencies, or whether the code is working properly or not. That will also be looked after IBBI. Matlab, from time to time, the review has to be done whether the law requires some amendment, some changes. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नाउ अ पर्सन हैज टू बी स्पेशलाइज्ड टू बी अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सो आईबीबीआई जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट करती है, उसके लिए वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू काम करती है। So to maintain this minimum standard, it is also the function of IBBI to maintain the minimum standards. Next, please. Now, और कोई भी grievance हो. Now, when you have insolvency professionals, insolvency professional agency, they cannot go to NCLT if they have any grievance. The authority to whom they are working under, that is IBBI. तो ये लोग जो है वो आईबीबीआई के पास जाएंगे अपने ग्रीवेंस सॉल्व करने के लिए। अगर किसी को रजिस्टर होना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू, द वर्क दे हैव टू डू,
they will do it through IBBI. So IBBI is basically to look after all the things which are related to insolvency और उसके अंदर बने जितने भी पिलर्स हैं उनके बारे में सारे रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग का जो काम है ये IBBI ओवरलुक करता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. After the introduction of IBBI, few parts of Companies Act have been amended. Now the voluntary winding up process and winding up, which were earlier done under the Companies Act, that is done under the IBC. So voluntary winding up जो है वो Companies Act से पूरी तरह से omit कर दिया गया है और वो 2013 Act में अब नहीं है, अब वो Insolvency and Bankruptcy Code में है. Then the part of winding up by the tribunal, that is compulsory winding up जो है वो बस 2013 Act में रह गया. Then the part where it says that if a company fails to pay its debt or inability to pay its debt, अब ये ग्राउंड भी जो है कंपनीज एक्ट से हटा करके कोड में ला दिया गया. तो अगर कोई कंपनी अपना डेट पे नहीं कर पा रही तो क्रेडिटर जो है वो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो वो आईबीसी के अंदर करेगा, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर करेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सरफेसी एक्ट में भी पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में देखा जाता था और ड्यूज के बारे में. अब जितना भी पार्ट आईबीसी से ओवरशैडो सॉरी जहां पर भी डिस्क्रिपेंसी थी सरफेसी एक्ट में और आईबीसी में, नाउ आईबीसी विल प्रिवेल ओवर सरफेसी एक्ट. जितने भी डेप्ट को लेकर के थे वो सारा जो है द कोड विल हैव एन ओवरपावरिंग इफेक्ट ओवर द एक्ट by virtue of section 238 and section 14. I mentioned section 14 here because section 14 is the moratorium. मतलब जैसे ही आपने IBC के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया तो फिर बाकी के सारे प्रोसीडिंग्स जो है वो बंद हो जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Already mentioned SICA has been repealed, so we don't need to go into the details of this. SICA पूरी तरह से repeal हो गया है. अब IBC is the only way. अगर कोई कंपनी सिक है, अगर लग रहा है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है अपने डेट पे करने का, आप सेक्शन 10 बन के कॉर्पोरेट डेटर में जाकर के एप्लीकेशन फाइल करो एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन विल लुक आफ्टर यू, इट विल टेक केयर ऑफ यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. We'll skip this and here comes the end. मेरे को जितना भी information आपको IBC के बारे में देना था I have covered with regard to corporate insolvency resolution in this particular slide, in these slides. I hope it was fruitful session and you got to understand the nuances of IBC with regard to corporate insolvency resolution. Thank you so much for such a wonderful session. आपने इतने अच्छे से सारे basics cover किए. It was very helpful to the students. So can't thank you enough. Thank you, ma'am. It was my pleasure to teach them about IBC. And if you want, we can have another session on personal insolvency if the students want that. Sure, ma'am. I'll just ask the students and then I'll get back to you. Yeah. Okay. Thank you, Have ma'am. all the students here. Bye, ma'am. Bye-bye.